नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर एनटीपीसी फरक्का के स्थापना दिवस से संबंधित है। एनटीपीसी फरक्का में स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह और गरिमामय माहौल में मनाया गया। यह अवसर संगठन के 5 दशकों के ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को समर्पित रहा। कार्यक्रम का आयोजन प्रशासनिक भवन परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता परियोजना प्रमुख देवव्रत कर ने की। अपने संबोधन में श्री कर ने एनटीपीसी फरक्का के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि कर्मचारियों को समर्पण, नवाचार और एकजुटता की भावना के साथ कार्य करते रहना चाहिए, जिससे एनटीपीसी अपनी नेतृत्व भूमिका को और सशक्त बना सके। इसके उपरांत सीएमडी एनटीपीसी ने कॉरपोरेट सेंटर से लाइव प्रसारण के माध्यम से सभी कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन के विविधीकरण पर बल देते हुए परमाणु, सौर एवं अन्य सतत ऊर्जा स्रोतों की दिशा में एनटीपीसी के प्रयासों को रेखांकित किया। स्थापना दिवस के अवसर पर यह उल्लेख किया गया कि वर्तमान में एनटीपीसी की स्थापित क्षमता 89 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। स्वर्ण जयंती वर्ष को यादगार बनाने हेतु देश भर की विभिन्न परियोजनाओं में 63,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम में सौम्या कर अध्यक्षा, उदिता लेडीज क्लब, राजशेखर पाला जीएमएम, सतीश एस जीएमबी एवं ईएमजी, नीरज अग्रवाल जीएम मेंटेनेंस एवं एयूडी, एएम मोहंती जीएम ऑपरेशन एवं एफएम, सभी विभागाध्यक्ष, यूनियन एवं एसोसिएशन प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। On this occasion of NTPC's 51st Foundation Day, I extend my heartiest congratulations to all of you. On this day in 1975, NTPC was born with a vision to power the dreams of young India. From the establishment of first power plant at NTPC Singrauli to today's becoming India's largest power producer with an installed capacity of more than 84 gigawatts across 53 power stations and 55 joint ventures and subsidiaries, NTPC's journey has been one of resilience and innovation. We achieved close to 440 billion units of electricity last year, a significant increase in total power generation as compared to the previous financial year, and we are continuing with lighting more homes, fueling new hubs, as well as our industries and energizing our economy of the nation. I can emphasize with pride that NTPC is the backbone of India's power sector. This year, our 4 stations achieved a PLF of 70.52% compared to the rest of India's 64.32%, a proof of our consistent performance. But this performance is just not a number. It is a collective hard work of more than 18,000 members of NTPC family who are responsible for contributing around 24% of India's total power generation. On this auspicious occasion of 51st Rating Day of NTPC, I salute to the contribution of each one of the NTPCians. As India marches towards becoming a developed nation by 2047, NTPC is ready to power that vision, aiming to achieve a target of 150 gigawatt capacity by year 2032, out of which 50 gigawatt will be coming from renewables. Our mission is very clear: clean, affordable and sustainable energy to all. Recently, NTPC earned 7 prestigious awards at the Brandon Hall Group, that is SCM Excellence Award 2025, widely known as the Academy Awards of Human Capital Management. And NTPC continues to lead the way with innovation, sustainability and deep sense of social responsibility. NTPC introduced 2 hydrogen fuel cell buses and established 2 hydrogen fueling stations at Leh and in Delhi. Our sustainable efforts have been honored with the leadership of Clean Energy Innovation Award at the India Energy Conclave and Exhibition 2025. Under mission recruitment of Government of India, NTPC participated in the 17th Day of Rozgar Mela and provided over 2,000 jobs to our young professionals across disciplines. And because of our philosophy of people before PLA, NTPC won the Gold Award Best Leadership Acceleration Program
at the People Matters Leadership, Learning and Cultural Conference 2025. NTPC is not just a company, but a golden legacy. The legacy of a self-reliant India powered by its own people. Our contribution goes beyond megawatts. Farakka, the pride of East, the largest power station of West Bengal, due to the efforts of our dedicated engineers, this year we have generated more than 7,500 million units at a PLF of close to 70%. Due to our consistent efforts, NTPC Farakka was honored with the most